Okay, so we're going to start about life process, which is your first chapter in biology. And till now, whatever you have done, even in ninth standard, you had few chapters where, you were studying about the basics of biology, where you study what exactly, specifically zoology means, what is botany. So that is difference in zoology and botany, where this chapter belongs to. Little bit part will be belonging to botany and little bit part will be belonging to your zoology. Why? Because here when I'm saying life process itself means that I'm going to talk about all the processes, all whatever reactions and everything is happening in life, in a form of life. So life, that's why the word for life is bio, right? So biotic organisms means what? Biotic organisms are something which has life. So whatever organism that has life, that is what we're going to cover in this chapter, that what all processes, what all reactions are happening in all the life forms. Now that can be plants, that can be animals, even we're going to talk about human beings. Okay, so that is just a quick introduction about what exactly we're going to talk in this chapter. Starting with the definition, as I already said, the definition of life process is what? Ki whatever processes which is happening, whatever reactions is happening in life, in human body, plant body, animal's body, there are different processes, and that is what is life process. So let's just quickly see the definition. So definition will be, it is basically a process. Yeah, so a process which maintain body functions and necessary for survival, in the sense what it is required for any organisms for their survival, right? So definition, very sweet and simple definition. It's a short definition. You can also, you will if you will check, you will find there are various kind of ways of writing the same definition, but the meaning is the same. The meaning is that you will have different life forms, different processes, and all these processes are very much essential for for survival. So we have two students now. Fine. So that is the definition of your life process. It is a process which maintain body functions and which is necessary for survival. In other words, I can also say, like as I was saying, there are different processes, different definitions for the same thing. So you can also write it is a process which is happening in human body, which is happening in plant or animal body, which is very much necessary to perform functions, in the sense it helps that particular organism to live. Abhi, if I'm in a simple word, agar मैं तुमको पूछ रही हूँ कि तुम्हारे बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, so that is basically क्या क्या तुम functions perform करते हो. So you will come up with various reactions which is happening in your body, right? So let's just list out few of the reactions what we call कि अच्छा ये process हमारे body में हो रहा है. So just for that, let's see what all the processes are, like the examples. So जैसे पहला तो बहुत कॉमन है, खाना खाते हैं हम, राइट? तो जो खाना खा रहे हैं, that is coming under your nutrition, right? What all nutrition you have, you're taking, and what's happening with that food which you're taking, what you are eating, all that thing will be covered in the part of nutrition, which we will be definitely talking further. So one example एक हो गया तुम्हारा nutrition का, right? एक example हो गया तुम्हारा respiration, which is happening in your body, right? Respiration, nothing but what we breathe. And that is actually, to be very honest, it is just half of what the definition of respiration is. Why I said to be breathe? Because that is what exactly when I ask somebody ki what respiration means, this is the answer which I get, right? What we breathe, like we breathe in oxygen, we breathe out carbon dioxide. But in this chapter, you will actually understand that just breathing
or just, you know, gaseous exchange between your body and the environment is not the only thing what you call as respiration. That is just called as what we say physical respiration, and in one word you can say breathing. Okay, so there is one more kind of the another half, second half of respiration, that is what we call as cellular respiration. In that, over here in this chapter, you will study that how exactly your gaseous exchange, what all you know, your breathing is, how is it contributing to your complete life process. Okay, we say that we need oxygen to live, like we breathe in oxygen, but why do we need oxygen to live? That is the main question. So that is different reactions which we will be gonna do further. Let's move on to the next life process. न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और क्या होता है हमारे बॉडी में? वी हैव ब्लड, ब्लड मूव ऑन हो रहा है हमारे बॉडी में, राइट? और प्लस उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. सो लेट मी राइट इट एज ट्रांसपोर्टेशन टू बी शॉर्ट एंड सिंपल. ओके, सो न्यूट्रिशन हो रहा है हमारे बॉडी में, रेस्पिरेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. There's one more thing which is happening which is very necessary. अभी obviously तुम खाना खा रहे हो, if there is an input there has to be some output, right? So that will be covered by your excretion. Okay, so that is your nutrition, respiration, transportation and excretion. Definitely there are many more life processes which are happening, but these are your basic life process which is very much essential for you to survive. Let that be plants, let that be animals, or even human beings, right? So let's see what all body systems, what all, you know, what we say organ system we have which is contributing to the same thing. Okay, जैसे nutrition है, तो nutrition में क्या हो रहा है? Let's talk one by one कि exactly what is happening in all your life process. nutrition में तुम खाना खा रहे हो, simple way में बोले तो कि खाना खा रहे हैं, क्यों खाना खा रहे हैं? तुमको energy चाहिए, right? You need, we say, why do we eat food? We eat food because we need energy, right? But कैसे energy कैसे मिल रहा है तुम्हें? What is exactly happening with your food which you're eating? जो भी हम खाना खाते हैं वो organic होता है, right? जो organic food होता है हम उसको खाते हैं, plus it's kind of complex कि उसमें carbohydrates होते हैं, proteins होता है, fats होता है, all those things are included in that. तो कौन सा तुम्हारा organ system है which is helping you to do the nutrition wala part? So that, can I say the organ system which is contributing to my nutrition, can I say it is digestive system? Yeah, so this is your digestive system, right? Then let me take your respiration. अगर मैं respiration की बात कर रही हूँ तो वो तो obviously respiration में ही लिखा हुआ है, वो word है that it will be your respiratory system. Transportation will be carried out by circulatory system. Lastly, excretion, that will be your excretory system. Right? So these are your few systems in your body. Obviously, you have many more. To be very honest, I'll just, if interested, try to list out 7 organ system which you have in your body. इसमें से 4 तो मैंने बता दिए. एक हो गया तुम्हारा digestive system, एक हो गया respiratory system, one is circulatory system, and the last one is excretory system. Just for your information, let me add few more organ systems. जैसे कि अब इसमें ही तुम्हारा apart from you know, all these 4, one very important system is there in your body, and that is your nervous system, right? Which is what is it handling? It is handling the control and coordination of your body, for which you obviously have a completely different chapter to just discuss about control and coordination, right? So here we won't be digging much into control and coordination. We will be sticking to this 4 main organ systems which will be giving you the proper body functions for your survival, right? So that is your life processes which we'll be talking about. अभी इसमें से specifically let us start with nutrition. Okay, let's go one by one.
out of which let me just start with nutrition wala part. I hope this much part is very much clear because it's just, I can say it's kind of introduction. Okay, so let us start with the first part, and that is your nutrition, right? न्यूट्रिशन मतलब क्या? न्यूट्रिशन मतलब कि इसमें तुमको कुछ चीजें तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो तुमको energy provide करेंगी, right? So can I say nutrients basically what do we nutrition means basically what do we consume? So we consume over here, can I write that what we consume nutrients, right? Nutrition है तो we consume nutrients. Nutrients is the thing what we consume. अब ये nutrients जो हम consume करते हैं ये और कुछ नहीं but these is complex organic matter, right? So what we consume is what is complex organic matter. अब if you can think of some, तो कुछ आएंगे carbohydrates, right? You have carbohydrates, then you have proteins, then you have fats, carbohydrate, proteins, fats, minerals, you have vitamins, etc, 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 right? So these are basically your complex organic matter what you consume, right? तो अभी जैसे तुम बोलोगे खाना खा रहे हैं हम, we are eating some are vegetarian, some are non-vegetarians. तो कुछ जन जो है leafy vegetables खाता है. Leafy vegetables में भी क्या है, यही सारी चीजें होंगी, right? I'm just giving it a very short, simpler form कि rather than just mentioning कि what type of food you're eating, let's just focus कि what kind of nutrients those food are consuming, like what it is exactly. So it is made up of carbohydrates, you have proteins in your food, you have fats, you have minerals, vitamins, etc, etc. These are the nutrients which you consume so that इससे हमको energy मिलेगी, right? So this is all about the nutrients. Now let's see what are different modes of nutrition. ये जो nutrition हमको मिल रहा है ये कैसे मिलता है, किस तरीके से मिलता है, that will define your modes of nutrition. Okay, so this is what we're gonna talk कि modes of nutrition basically क्या होता है. तो modes of nutrition अभी अगर मैं अपनी बात करूं या फिर let's talk about us, let's talk about humans. तो how do humans take in nutrition? Humans क्या करते हैं कि उनको भूख लगी, किचन में गए, खाना खा लिया, right? But that is not what we are talking about over here. Modes of nutrition in the sense कि तुम अपना जो nutrients हैं, जो तुमको nutrition के लिए जो nutrients चाहिए वो तुम किस source से ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो और कैसे ला रहे हो. तुम बोलोगे कि हम किचन में जाके खाना खा रहे हैं, बट वो किचन में खाना कहाँ से आ रहा है, right? If you are eating for example घर पे पालक की सब्जी बनी है तो वो पालक exactly, तो तुम ये नहीं बोलोगे हमने सब्जी खाई, तुम like वो भी किचन में भी आया है तो कहीं से आया रहेगा, right? It is nothing but palak is what, it's a leaf, it's a part of a plant. So what you are consuming, can I just simply say कि what you are consuming is nothing but your plants, right? फिर अभी समझो जो कुछ ये रहता है नॉन वेजिटेरियंस जो होता है, नॉन वेजिटेरियंस बोलेंगे कि नहीं आज हमने चिकन खाया उससे हमको एनर्जी मिली. अब चिकन क्या हो गया, चिकन इज अ पार्ट ऑफ एनिमल, राइट? मतलब इट इज मेड अप ऑफ एनिमल, so that comes under animal. So what you are consuming, what is your mode of nutrition? So अगर मैं किसी human के बारे में बात करूं कि उनका mode of nutrition क्या है, तो humans का mode of nutrition है कि या तो वो plant source पे depend करेंगे या तो वो animal source पे depend करेंगे, and that will give you your two difference कि एक होता है vegetarian, non vegetarian, right? So that is your mode of nutrition. So based on that, अभी बाकी चलो humans की बात कर ली because we can directly comment on that. But what about others?
लाइक व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, बाकी लोग कैसे करते हैं। तो उसमें आता है तुम्हारा मेन जो टॉपिक आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, दैट इज या तो कुछ कुछ होते हैं जो खुद का खाना खुद से बना रहे हैं, राइट। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक है तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक, sorry. So one is your autotrophic mode of nutrition, एक है तुम्हारा heterotrophic, right? So these are two modes of nutrition which we know. Abhi autotrophic means क्या? Let me just divide these two terms, autotrophic और heterotrophic का अगर मुझे divide करना है, let's say auto. तो auto means क्या? If I want to just talk about auto means यहाँ पे आ जाएगा self, मतलब खुद से, right? And if I'm talking about trough, तो my trough will be nothing but my feeding process. Okay, so let me just write over here as feeding. So when I'm saying autotrophic मतलब auto means self, troph means feeding process. That means can I say autotrophic मतलब खुद से खाना बनाना, मतलब खुद का खाना खुद से बनाना. Now again here once somebody asked me खुद से खाना मतलब खुद का खाना खुद से बनाना, तो even humans do that, right? Even humans खुद से खुद का खाना बना रहे हैं, right? But that is not exactly what it is. तुम खाना किससे बना रहे हो? That is also matters. Suppose just now we took an example कि somebody just said कि we made spinach का सब्जी, पालक की सब्जी बनाई, तो तुम खुद का खाना खुद से बना रहे हो. But is that what the basic source of food is? No, right? Why? Because यहाँ पे when you are talking about spinach, so that spinach is nothing but a plant source, right? That means you are depending on a plant source to get your nutrients. So that means you are not making your food on your own. You are depending on some other source of food, or I can say some other life form for your nutrition, right? So autotrophic मतलब इसमें कौन आएंगे, ऐसे कौन, मतलब अभी जैसे कुछ एनिमल्स भी होते हैं, वो भी किसी पे डिपेंड रहते हैं. एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन सम और द अदर ऑर्गेनिज्म. बट देन ऑटोट्रॉफिक में कौन आएगा, जो खुद का खाना खुद से बना रहे. सो there's only one example left, that is your plants, right? We say that plants, अभी plants को तुम पानी डालते हो, अब हम बोलेंगे हम पानी डाल रहे हैं उनको, जो न्यूट्रिशन जो देते हैं सॉइल में, वो सब हम दे रहे हैं. So that is basically a very simple inorganic substances, right? उसमें क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, right? कुछ मिनरल्स हो रहे हैं, फिर तुम पानी डाल रहे हो. मेन बेसिक चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है प्लांट को सरवाइव करने के लिए? एक कि उनको पानी मिलना चाहिए, पानी गया, सनलाइट मिलना चाहिए. ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तो सनलाइट चाहिए और उनको पानी चाहिए, राइट? एंड ऑब्वियसली उन लोग सॉइल में ग्रो होते हैं. तो ऐसा क्या है, तो अभी उनको खाना तो दे नहीं रहे, पानी, और तुम इसको सनलाइट को तो खाना नहीं बोलोगे, क्योंकि even you can't survive, right? If I giving you water and I'm like, no, I'm giving you water, that's more than enough. Now try to survive for years. It's practically not possible. You do need nutritions also, that is your nutrients, carbohydrate, protein, fats, minerals, vitamins. ये सारी चीजें भी तुम्हारी contribute होंगी into your growth or into your building of your body. So autotrophs में ऐसा क्या हो रहा है कि उनको खाने की जरूरत नहीं है, वो खुद का खाना खुद से बना रहे हैं. That we will see further. Let's move on to heterotrophic. Okay, heterotrophic. Now अभी जैसे autotrophic का हमने differentiate कर दिया कि auto means self होता है, troph means feeding. Same way तुम्हारे heterotrophic में भी वही हो जाता है कि hetero is word where you are depending on some other, and actually to be very precise, it is different. Okay, you are depending on some other organism for your food. तो वो हो जाता है तुम्हारा hetero. Okay, and troph remains the same. Troph means feeding, right?
ओके, सो हेट्रोट्रॉफिक मतलब अभी जो हमने इतना बड़ा डिस्कशन किया ह्यूमंस के बारे में, प्लांट्स, देन एनिमल्स के बारे में कि उन लोग खाना कैसे खा रहे हैं, तो दूसरे पे डिपेंड होके खा रहे हैं, तो वही हो गया हेट्रोट्रॉफिक। मींस क्या कि तुम खुद का खाना खुद से बना नहीं सकते हो। मैं अगर बोलूं कि नहीं आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से खुद का खाना खुद से बनाऊंगी, तो मैं बाहर से कुछ नहीं खाने वाली। ओके, ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगी, पानी पीऊंगी, तो पानी पी रही हूँ, मैं खुद का खाना खुद से बनाऊंगी। तो like just because I decided that I want to make my own food, that doesn't mean my body will react in the same way. My body it won't support me for a very long time. अभी कुछ कुछ जन बोलते हैं कि तुम 2-2 दिन तक बिना खा के भी you can survive. That's true. And why is that? Because जब तुम दूसरा खाना, दूसरा source when you are inputting in your body, तो सब कुछ यूज नहीं होता, राइट? पूरा पूरा का पूरा यूज नहीं हो जाता। उसमें से तुम न्यूट्री जो भी तुम्हारा पूरा डाइजेशन वाला प्रोसेस होगा, उसमें से तुमको एनर्जी मिलेगा, उसमें से कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो जो चीज तुम्हारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, मतलब इंस्टेंटली जरूरत होगी एनर्जी की, वो तुम यूज कर लोगे, बाकी जो रहेगा वो स्टोर हो जाएगा। Now, but obviously that depends ki how much amount of work you are doing and whether you are, eating according to what your lifestyle is. So that is completely a different topic. तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक मीन्स क्या कि यू आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट सोर्स, चाहे वो प्लांट सोर्स हो चाहे एनिमल सोर्स हो, राइट? सो यहाँ पे नॉट जस्ट ह्यूमंस बट ऑल्सो एनिमल्स, all your animals, even let me tell you, there are few plants जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शोकेस करते हैं। जैसे लेट मी जस्ट टेल यू वन एग्जांपल, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट इज वन जो कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं, बीज हो गए, हनी बीज हो गए, या कुछ और इंसेक्ट्स, फ्लाइज हो गए, वो अगर फ्लाइज, पिक्चर प्लांट इज रियली वेरी ह्यूज प्लांट, अगर उनके ऊपर जाके वो अगर दे आर सिटिंग हनी बी और समथिंग सम इंसेक्ट, सो दे जस्ट ट्रैप देम and they consume it, they just digest that plant. तो obviously अभी उसमें से भी उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो they are also showcasing some kind of, like I can clearly say कि it is heterotrophic mode. तो plants भी heterotrophic mode में आते हैं, but not all the plants. अभी तुम ये कुछ नॉर्मल प्लांट ले लो, जैसे तुम्हारा मैंगो ट्री हो गया या कोई कोकोनट ट्री, उसके बगल में तुम कितने भी इंसेक्ट्स डालो, इनफैक्ट दैट इज बेसिकली एक अलग ही इकोसिस्टम बन जाता है। उनके खुद के ऊपर भी ढेर सारे बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं विच ग्रो ऑन दोस प्लांट, बट दैट वोंट डिसाइड कि अरे नहीं आज आज मूड की, आज खुद से खाना बनाने का मन नहीं है, तो लेट्स जस्ट टेक दोज इंसेक्ट्स। इट वोंट हैपन। So it is very much fixed कि what your body style is, how your body is been designed, and उसी हिसाब से तुम्हारा जो है complete digestion process होगा, right? So autotrophic में तुम्हारे green plants आते हैं. Why I'm stressing on the word green is because we gonna see now कि एक बहुत important पिगमेंट होता है जो तुम्हारे बॉडी में होता है, मतलब नॉट तुम्हारे मीन्स प्लांट्स के बॉडी में होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके बॉडी में होता है, जो अपार्ट फ्रॉम जो हमने डिस्कस किया कि पानी और सनलाइट, अपार्ट फ्रॉम पानी और सनलाइट, वो एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड, राइट? If I'm sure there must be few students who must have already guessed कि वो कौन सा pigment है. So let's just move forward and see specifically talk about plants. Okay. So if I'm talking about plants over here, plants, to be precise, green plants. Yeah, so here we will be talking about plants, and plants एक life process करते हैं जो सिर्फ plants करते हैं. Animals don't do that process, and that process is nothing but photosynthesis. Yes. Now let's break down this word also and check out exactly photosynthesis. Now it's a very huge word, but let's just break down and see exactly photosynthesis means what. तुम लोग ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोटोन के बारे में पढ़ा होगा, you study about light and stuff, तो वहां पे you must have heard this word photon, right? So photon, the word itself is for light, right? And next half is synthesis. So synthesis means what? Synthesis means any kind of a production,
right? So in short, अगर मैं बोलूँ photosynthesis means photon and synthesis, can I say कि over here, अभी obviously खाने की बात कर रहे हैं, तो can I simply say कि plants खाना synthesize कर रहे हैं with the help of light, with the help of sunlight. So can I say कि photon, that means light के help से they are doing synthesis. So they are producing their food with the help of light, because light is playing a very important role in plant. तुम एक plant को dark में रख दो, अंधेरे में रख दो, और फिर तुम उसको पानी डालो, कितना भी अच्छा soil डालो, कितने भी अच्छे quality का कुछ भी तुम उसको mineral, vitamin सब produce करवाओ, but that plant will die after a point. Why? Because that plant is not getting proper sunlight. So it's not that कि any one factor miss रहेगा तो कोई बात नहीं चलता है. No, you need to have all the factors which is very much necessary for that particular plant to produce the food. जिसमें से, as I said, photosynthesis, it is nothing but a reaction. Let's just now directly jump to the definition of photosynthesis. Simply word में तो हम लोग समझ गए, मतलब खाना बनाना सनलाइट की हेल्प से, कि चलो सनलाइट आ रहा है उससे खाना बनाते. मेन डेफिनेशन क्या आ जाएगा कि it is a process by which the plant is producing food with by consuming certain inorganic materials. Very important कि plants क्या consume करते हैं, inorganic materials. Simple inorganic material को वो convert करते हैं into organic material, organic substances or organic nutrients in the presence of sunlight. Okay, so let me just write it over here so that it will become more easy for you. So I can say कि मेरा जो photosynthesis है, photosynthesis एक process है. I'm writing it in the form of flowchart. It will be easy for you to go through the definition. It is basically a process in which plants, to be precise, in which green plants, right, in which green plants convert simple inorganic components into complex organic component, and most importantly in presence of sunlight and chlorophyll. Now, अभी तक तो मैंने जितना कुछ बोला, सब समझ में आया पूरे डेफिनेशन में. लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ से आ गया? What is chlorophyll? Chlorophyll is exactly that pigment which I was talking about in the start, कि photosynthesis करने के लिए plants में, green plants में क्यों stress out कर रही थी कि why green plants only do photosynthesis? Because green plants look green in color because उनके अंदर एक green pigment होता है जिसको हम बोलते हैं chlorophyll. Okay, so chlorophyll is the green pigment which is present in the plant. Plant के body में, मतलब जो leaf होता है, let's talk about leaf, क्योंकि leaf ही green color होता है, right? So suppose this is your leaf, तो leaf का जो top part होता है, टॉप पार्ट के मतलब एकदम जो वैक्सी वाला कोटिंग होता है, वैक्सी वाले कोटिंग के नीचे वाला जो लेयर होता है एपिडर्मिस, राइट? एपिडर्मिस के भी नीचे जो लेयर होता है उसमें तुम्हारे सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. Okay, so this chloroplast is nothing but it is a cell organelle. Okay, chloroplast is nothing but a cell organelle which is containing the pigment chlorophyll. तो ये chlorophyll एक green color का pigment होता है. अब ये क्यों जरूरी है आपको, क्यों हम बार बार उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं? तो क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है कि क्लोरोफिल सनलाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है. तो अभी प्लांट्स, अभी जस्ट बिकॉज उनको सनलाइट में खड़ा किया, इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग पूरी तरह से सनलाइट को अंदर ले रहे हैं. दे आर नॉट एब्जॉर्बिंग सनलाइट, बट अगर उनमें क्लोरोफिल है तो दैट
chlorophyll will do the function of taking in the क्या बोलते हैं तुम्हारा सनलाइट, राइट. अभी जैसे ह्यूमंस होता है, ह्यूमंस में तुम्हारा यू आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, इट्स वेरी नेसेसरी. बट लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी जस्ट होल्ड योर नोज एंड योर माउथ. आई विल नॉट अलाउ यू टू ब्रीथ इन एंड देन मैं बोलूंगी ठीक है ना तुम हवे में ही हो ना, ऑक्सीजन तो मिल रहा है, टेक इन ऑक्सीजन. सो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो वी विल टेक इन हम जैसे हमको ऑक्सीजन के लिए वी नीड आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेम वे तुम्हारा जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल प्लांट्स का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो उनको सनलाइट ट्रैप करने में हेल्प करेगा. ओके, आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू बाय सेइंग दैट. इट्स जस्ट अ comparison to make you understand better. Okay, so the chlorophyll is the green pigment. It is a green pigment which is helping the plant to trap the sunlight. Okay, so that is the process of photosynthesis which is happening. Okay, now I just want to talk more about why I said that it is converting simple inorganic substances into organic substances, right? ये मैंने क्यों बोला? Obviously अभी ये जो प्रोसेस होता है, कोई भी चीज को सिंथेसाइज करने वाला जो प्रोसेस होता है, चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो, what we call them as anabolic process, right? I hope you are aware of that term. If not, it is just a process जहां पे तुम simple substances को लेके यूज करके you are building a complex substance. So when you're using simple substance and you're converting them into complex substance, that what you call as anabolic process. Okay, उसी का उल्टा अगर मैं कर दूं कि ये complex substance है और ये complex substance को break down करके simple कर दो, तो वो हो जाता है तुम्हारा catabolic process. Okay, and together they are called as metabolic process. I'm not writing this over here because we will be discussing it better again when we will be doing the digestion wala part. Okay, so right now because it is photosynthesis, that's why I just wanted to introduce that term to you, that is anabolism. That is it, yahan pe tumhara anabolic process hoga. Okay, so why simple और what kind of simple inorganic substance को तुम बोल रहे हो कि ये inorganic simple inorganic substance है और वो convert होके organic substance बन जाता है, that too complex organic substance. So why I'm saying that? Because अब यहाँ पे जो simple है वो simple is nothing but so this simple inorganic components are nothing but जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर, ये जो दो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द प्लांट्स. और या फिर मैं और सिंपल वे में बोलूं तो यही वो दो चीजें हैं जो तुम्हारे रिएक्टेंट्स होते हैं, कि यही दो के हेल्प से काफी होगा प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए, राइट? खाना मतलब क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ना. ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट, जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं तो दे फॉर्म ग्लूकोज. ग्लूकोज किसके हेल्प से? बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट? सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑल दीज थिंग्स आर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो पानी तो ऑब्वियसली तुम पानी दे रहे हो प्लांट को, इससे प्लांट्स को पानी मिलता है. Carbon dioxide, plants take in carbon dioxide from the atmosphere, just like we take in oxygen from the atmosphere. Plants carbon dioxide को breathe करता है. So ये हो गया तुम्हारा simple inorganic substances जो है तुम्हारा carbon dioxide and your water. This is getting converted, इनका reaction होगा, क्योंकि मैंने starting में बोला right कि ये जो है ये reactant है. तो ये reactant है क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए. ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज इज नथिंग बट इट इज अ हाइड्रोकार्बन, राइट? इट इज अ हाइड्रोकार्बन. तो इसमें एक कार्बन होगा, राइट? हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन भी होगा, बेसिकली अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट? तो ये कार्बोहाइड्रेट बना रहा है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. अब ये ग्लूकोज कैसे बनेगा? अब CHO तो लिख नहीं सकती, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आ जाता है मेरा 612O6.
ठीक है, अब ये बैलेंस तो लग नहीं रहा होगा, रिएक्शन इज डेफिनेटली नॉट बैलेंस. तो हाउ डू वी बैलेंस दैट? यू जस्ट हैव टू ऐड 6 CO2, राइट? अभी यहाँ पे I'm not stressing on the reaction. Let's just keep reaction for later on process. We'll balance the reaction later on. Right now, let's just focus on what is simple inorganic. That simple inorganic is carbon dioxide and your water molecule. So carbon dioxide and water molecule together, they are reacting and they are giving glucose, right? And glucose is a complex organic matter. So this is exactly what I was talking about कि photosynthesis में जो simple inorganic components को plants use करता है and it converts it into complex organic matter. So this is exactly what I was talking about. तो simple inorganic, carbon dioxide, water. Complex organic में आता है तुम्हारा glucose, that is C6H12O6. Okay. One more very important point जो हमने already discuss किया है, that it is happening in presence of sunlight, right? तो यहाँ पे one more point will be added कि it is happening in the presence of sunlight and chlorophyll. If you see here, it is getting converted into a reaction, right? So let me just again नीचे एक proper reaction लिख देते हैं तो better हो जाएगा. और so if I'm talking about the reaction, carbon dioxide plus water, they are doing the reaction in the presence of sunlight chlorophyll to give your glucose plus oxygen. Now oxygen is basically a byproduct. अभी plants के लिए byproduct, जैसे humans में हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और हमारे बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे यहाँ पे इनका बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन. नाउ बिकॉज हियर वी आर फाइनली रिटन द क्या बोलते हैं रिएक्शन, तो रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं. कार्बन यहाँ पे एक ही जगह है, सिंपल वे बता रही हूँ रिएक्शन बैलेंस करने का. इफ बाय एनी वे इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, यू कैन क्लियरली सी C6 है और यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड पे कहीं पे भी कार्बन यूज नहीं हो रहा, तो बिना ध्यान दिए चुपचाप ये जो 6 है ये यहाँ पे लिख दो. हो गया, कार्बन 6 हो गया, मतलब कार्बन बैलेंस है तुम्हारा, राइट? अभी तुम ऑक्सीजन चेक कर लो, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, राइट? अब ये 6 2 कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड पे, बट यहाँ पे सिर्फ 3 ऑक्सीजन है, राइट? सो right now keep oxygen aside, focus on hydrogen. Hydrogen 12 है, यहाँ पे कितना है 2, एक ही हाइड्रोजन है. उस साइड कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, एक ही. जैसे कार्बन एक ही जगह था इसलिए हमने पहले कार्बन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन भी एक ही जगह पे, तो लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन ऑल्सो. दैट इज अगर मैं इसको 6 कर दूं, या इसको मैं अगर 6 कर दूं तो ये बन जाता है 12, राइट? तो ये हो गया मेरा 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12 है, नो कंफ्यूजन. हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड. लास्ट में बचा तुम्हारा ऑक्सीजन. यहाँ पे अब कितना हो गया, ये 6 के वजह से ऑक्सीजन भी 6 हो गया और यहाँ पे भी, राइट? हियर इज 6 एंड दिस इज 2, तो 6 times 2 ऑक्सीजन आर देयर. तो वो जो पूरा बैलेंस हो जाएगा, अगर तुम इधर भी 6 कर दोगे तो वो पूरा तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा. एम आई राइट या नो? check this out. So here actual में अगर देखा जाए वहां पे तो तुम्हारा, so here if you will check and you will compare, तो तुम्हारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा, right? I hope it's clear to you guys.
Yeah. Okay. Fine. So this is your final. Oh, I'm so sorry. This is your final reaction for your photosynthesis. Okay. So this is your reaction of photosynthesis. Again, let me just give you a quick revision about the definition. So photosynthesis is what? It is a process जहाँ पे plants, जो green plants हैं, वो green plants convert कर रहे हैं simple inorganic substance को into complex organic substances in the presence of sunlight and chlorophyll. उसी को हमने सिंपल वर्ड्स में रिएक्शन पे, लेट मी डायरेक्टली जंप टू रिएक्शन. तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज किया हमने. वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो हमारा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हमने ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाया. ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 याद कर लो. एंड बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकल रहा है जो वो वापस से रिलीज कर देता है इनटू द एटमॉस्फेयर. ओके, आई होप नाउ दिस फोटोसिंथेसिस पार्ट इज क्लियर, राइट. तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफ. ना बिकॉज ये खुद का खाना खुद से बना रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमको चाहिए रहता है कि बाहर से खाना लो, खाना खाते हैं. वो खाना क्यों खा रहे हैं? कोई भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो. दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, राइट, ग्लूकोज. तो कोई भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट होने दो, वो कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक डाउन करते हैं. जैसे हमने कुछ खाया, जैसे कि यू नो टू बी वेरी प्रिसाइज, सपोज मैंने कोई शुगर खा लिया, यू नो शुगर खा लिया, तो वो शुगर इज ऑल्सो नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. वी आर नॉट हैविंग ग्लूकोज, वी आर हैविंग शुगर विच माइट बी इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्टेट और कार्बोहाइड्रेट. तो वो ब्रेक डाउन करते हैं डाइजेशन के हेल्प से टू फॉर्म योर ग्लूकोज. ओके, so we are breaking down glucose. Why we are coming down to glucose? Because later on when we will be studying about respiration वाला part, तो वो respiration वाले part में you will realize कि मैं ग्लूकोज के बारे में इसीलिए बोल रही थी क्योंकि वो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज के हेल्प से ही like that glucose will become the reactant and उसके ऊपर हम reaction करके what we will form is the energy. Okay, energy in the form of, ये तुम लोग ने पहले भी बहुत बार सुना है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी करेंसी होती है, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट. ATP is nothing but adenosine triphosphate, right? So that is your complete energy का फॉर्मेट. तो जैसे मैंने एनिमल्स का डिस्क्राइब किया, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज हमको क्यों चाहिए, बिकॉज वी वांट टू डू डिफरेंट लाइफ प्रोसेस. चाहे वो मेरा न्यूट्रिशन हो, डाइजेशन हो, इवन ये तो लाइफ प्रोसेस हो गए, बट मेरे को मूव करना है. नाउ आई एम टीचिंग, आई एम टॉकिंग, राइट, आई एम टॉकिंग, आई एम राइटिंग, आई एम मूविंग माई सेल्फ. तो वो सब चीजें, इवन आई एम थिंकिंग ऑल्सो व्हाट आई एम टॉकिंग, उसके टाइम पे मैं थिंक भी कर रही हूँ. मतलब a lot many actions are happening, lot many things are happening with me, what I'm doing. और कोई भी चीज करने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं तुम लोग से like you know I'm teaching you, उसके लिए भी I need energy to do that. From where am I getting energy? Am I eating continuously कि मैं खा रही हूँ और you know खाते खाते मैं तुम लोग को बोल रही हूँ अगर खाऊंगी नहीं तो फिर मेरे पास एनर्जी नहीं रहेगा? No, right? Why? Because once I have eaten my meal, my energy, now this complex organic matter which I have eaten, that will be broken down, right? Broken down to form ATP. तो जैसे तुम्हारा प्लांट्स होता है, तो ये प्लांट्स भी वही चीज करते हैं. इन लोग खुद का खाना खुद से बना रहे हैं. सिंपल तुम्हारा ग्लूकोज बना रहा है विच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, बट ये जो ग्लूकोज है उसको उन लोग, अगर उनको ये सब चीजें करनी है, रिएक्शन करना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि प्लांट सिर्फ खाना बनाने का काम करते हैं, राइट. उन लोग खुद को भी खाने की जरूरत है, इसीलिए उन लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं. दे जस्ट नॉट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, दे ऑल्सो टेक ऑक्सीजन. बट कब लेंगे? जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. वो कब होगा? रात को, राइट, क्योंकि रात को लाइट ही नहीं रहती, देयर इज नो सनलाइट. तो अगर सनलाइट है ही नहीं रात को, तो सनलाइट नहीं है, इसीलिए
रात के समय पे what they do is they stop their photosynthesis and then they start यूटिलाइजिंग द एनर्जी जो उन्होंने बनाया है, जैसे तुम्हारा ग्लूकोज, फिर वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने लगते हैं. ओके, सो थिंक अबाउट इट लाइक बहुत बार तुम लोग ने सुना होगा कि रात के टाइम पे प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, राइट? तो think about it, and actually it's better if I talk about this in next lecture, because I'm just hoping to get some reply from you guys also. Okay, so do comment on that. Why do we say, why is it said that plants रात को, like you know, हम बोलते हैं कि रात को सोते हैं plants, तो उनको disturb नहीं करना चाहिए. तो रात के टाइम पे कभी तुम लोग ने देखा भी नहीं होगा, रात को कोई पानी नहीं डालता प्लांट्स को, कुछ नहीं करता. तो think about it, why is that so, and get back to me in the next lecture. फिलहाल this is what your complete photosynthesis is. Okay, in next lecture I'll be precisely talking about stressing more on heterotrophic. I'll continue with heterotrophic. ये तो autotrophic mode हमने detail में study कर लिया. Next time we'll be talking about your heterotrophic mode of nutrition. Okay, जिसमें से we'll see कि what are the different types of heterotroph and what all you know, organisms are involved in it. Okay, so just a quick recap to what we did in today's lecture. We started with the chapter life process. Life process matlab kya hota hai? Life process, life process means it's a process which maintain your body functions and which are necessary for survival. Okay, what are the body functions which are necessary for survival? That is nutrition, respiration, transportation, excretion. Then we checked on what are the different body systems which are involved in it. We checked on to what nutrition which we take, carbohydrate, protein, fats, minerals, vitamins. उनके mode of nutrition क्या होते हैं, उसमें से हमने दो देखा, autotrophic, heterotrophic, in which we focused more in detail about autotrophic, जहाँ पे we studied about plants in detail, or to be precise, we studied about photosynthesis. Okay, so lastly, the reaction, carbon dioxide. Please remember this reaction. Whenever you are writing an answer about photosynthesis, you need to have a proper balanced reaction. So yeah, that's it. That's all for today. Thank you.